we see quite dangerous stunts also happening here. Are there any restrictions on how dangerous can a stunt be or something this time? Yeah, this is the restriction. That's the restriction for it. Okay. Is there any No, restriction? I think there are a lot of precautions taken by the entire team to ensure the safety of all the contestants. Of course, there is an inherent aspect of there is always an inherent aspect of risk and fear in a lot of the performances. But I have to say, accurate measures are taken to a very large extent to make sure that everything is safe, secure, and that there isn't any kind of, I think, an eventuality that might be detrimental. In fact, you'll be surprised. A lot of them, when they do those stunts, they don't have any of these facilities. In their real life. In their Yeah. real life. They do it absolutely bare. Over here, every single precaution is taken, so that's pretty good. मैं इस टाइम मैंने ट्रपीज कोशिश किया है आलोक आई हैव डन ट्रपीज सर्कस एक्ट में मैंने वो किया है और काफी हैंगिंग और स्ट्रेचिंग एंड लिफ्टिंग ऐसे बहुत ऐसी चीजें मैंने किए हैं यू विल सी मी डूइंग दीज थिंग्स ऑन एवरी एपिसोड प्राइम टाइम पे आपने और चीजें देखी हैं जो होता है विदाउट अ डिस्क्लेमर अगर कुछ शोज आप देखोगे प्राइम टाइम पे जो डिस्क्लेमर के बगैर आते हैं तो दे आर इवन मोर डेट्रीमेंटल टू द माइंड ऑफ अ चाइल्ड देन गुड ओल्ड रियलिटी टेलीविजन मैं ये कहूंगा कि कुछ ऐसे सीरियल्स आते हैं जो जिनकी रिग्रेसिव थॉट्स आर मोर डेट्रीमेंटल टू द माइंड आई वुड से यहां तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम जब भी कुछ डेंजरस हो ऑल थ्री ऑफ अस मेक इट अ पॉइंट एट सम पॉइंट टू से कि अगर बच्चे ये देख रहे हैं तो प्लीज घर पे कोशिश ना करें बिकॉज इट्स विदाउट एनी प्रिकॉशन एक्सेट्रा एट होम तो आई एम श्योर किरण जी तो हमेशा कहती हैं आई नो दैट फॉर अ फैक्ट और हम भी कॉपी करते हैं किरण जी को क्योंकि ये माता है शो की तो जो कहेगी सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेगी There are many acts which I've thoroughly enjoyed. That just was so much energy. And of course, the fact that there were women from all ages. A lot of them are housewives. A lot of them are doing, little stuff at home, making things, selling. So it's amazing to see that energy that they bring to the stage. And what you saw today was a little preview. There are far more of them actually in totality over there when you see them perform. So it is quite amazing. And the kind of energy they bring to the stage, it's unbelievable. I really do like them. I think they're fantastic.